विश्वसाई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. My appeal to each and every intellectual in the world, each and every leader of the greatest country also, think about the Mother Earth. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिप्रियवतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। Now you always talked about the importance of keeping all five elements in harmony, Baba, but this year you are very much focused about earth. Do you foresee any natural calamity in near future? Is that... You ask a critical question. I should not tell the coming events of the future, but one yogic power is saving. The yogic power is saving the world in severe conditions. मैं सच में तहे दिल से चाहता हूँ कि भगवान हमारे सारे विश्व को, ईश्वर हमारे सारे विश्व को, अल्लाह हमारे सारे विश्व को शांति दे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो शांति आई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मगर शांति बहुत चाहिए। अशांति चल रही है, इसको हम आप मिलके अगर मन में सोच लें कि हम शांति का निर्माण ही करेंगे तो भगवान आपको बहुत सहायता देगा, बुद्धि देगा, जिस बुद्धि से हम लोग ऐसा विश्व निर्माण कर सकते हैं कि जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सबके घर में जय हो। नमस्कार, शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक व्यास और आज के इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुने वो मंत्रोच्चार जो हमारे भीतर से जागृत कर देते हैं प्यार। धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्राः समदोजयेम धनुःशत्रोरपगामं गृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्राः समदोजयेम धनुःशत्रोरपगामं गृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्राः समदोजयेम धनुःशत्रोरपगामं गृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। विश्वकल्याण सिद्धिरस्तु। हरिः ओम्। That if you want your mind
to remain focused on an object of your choice, then there should be a liking. What is it that makes the mind focused upon something? When the mind likes it, when the mind enjoys it. This is an important thing. So by meditation here, we mean not just a flow of thought on any topic or any object. With that kind of meditation, we are familiar. So meditation that we are talking about is meditation upon God in one way or the other, where the mind is able to maintain its focus for a length of time. "10 years, neither a short time nor too long a period. But since 4th July 2002, many Baba's devotees have found a new home at Baldwin. Sai Mandir at Baldwin is indeed a direct manifestation of Baba's infinite compassion. Meditating on Sai Baba is a blessing. जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। Meditating on Sai Baba is a blessing. We long for uplifting company. Baba makes us aware that this eternal company is available to us all the time, at all the places. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. 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 Sri Sai Nath Jai. Shirdi Sai Nath Jai. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. Sri Sai Nath Jai. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. Gurudeva Datta. Gurudeva Datta. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. Gurudeva Datta. Gurudeva Datta. Gurudeva Datta. Now you always talked about the importance of keeping all 5 elements in harmony, Baba, but this year you are very much focused about earth. Do you foresee any natural calamity in near future? Is that... There should not be any severe natural calamity for the earth. There should not be. We have faced so many natural calamities in the past 5 to 6 years. Tsunami, Indonesia, tsunami, Japan, eruption of the volcanoes, severe hurricanes, earthquakes, everywhere, in India also. In America also, 5 days before, in Dallas, severe earthquake 3 times at a time. Three times. They were frightened and they called me. So, Mother Earth is in great danger today. But each and every scientist know about it. Each and every leader of the country also knows about it.
but they are not working to save the Mother Earth. We are fighting for the nation, country. We are fighting for the religion. We are fighting for this and that. But we are neglecting the Mother Earth, which is the base for all countries, for all oceans. Ocean is only one. We are calling by different names. Land is only one. We have divided into continents, continents into countries, countries into states, states into counties, counties into cities. For our convenience, we are dividing, but the earth is unique. All the people who are living on the earth belongs to only one family. They are all the children of the Mother Earth. That's why in ancient India, the spiritual scientists, yogis declared we have to worship the Mother Earth. Samudra Vasane Devi, Parvatasthana Mandale, Vishnupatni Namastubhyam. So we have to worship the Mother Earth. Mother Earth is one wife of Vishnu. One wife is Sri Devi. Vishnu means the infinite universe. Sri Devi means Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, power of will, power of knowledge and power of action. And if it comes in physical form, then Panchabhautika Prithvi Tattva is essential. That is Prithvi Ma. Not only this, the whole universe is also having Prithvi Tattva and this Trigunatmaka Tattva. Trigunatmaka Tattva is Sri power, and Panchabhutatma Tattva is the Prithvi, Apas, Tejo, Vayu, Akasha, Prithvi Tattva. For universe, the Vishnu, these two powers are two wives. Why? How they are very spiritual scientists. They declared that is a practical immortal science. So today, we have to think about the Mother Earth. That is very essential. If the Mother Earth is not in good condition, every country has to suffer a lot. We are spending a lot of money for wars. We are spending a lot of money for luxurious lives. We are spending a lot of money for gambling and etc., unnecessary, unwanted things. But we are not thinking about the safety of the Mother Earth. Suppose take this house, we are in this house. If the house is in a safety condition, we will be in safety condition. If something damage happens to the house, we will be in critical condition. So my appeal to each and every intellectual in the world, each and every leader of the greatest country also, think about the Mother Earth. You think your politics and politics. You think about the position. You think about your family. You think about your country. Good. But your country, your religion, your caste, and your language, and your section, your frontier will be safe when only the earth is in peaceful condition, in safety condition. So first of all, we have to think about the Mother Earth. That is my appeal this year. I want to take this message to each and every person. I am successful, no doubt, but you ask a critical question. I should not tell the coming events of the future, but one yogic power is saving. The yogic power is saving the world in severe conditions. Suppose take one example. Second time tsunami warned. They warned tsunami is coming in Indonesia second time. 28 meters height. They declared. NASA scientists also declared from America. But what happened? Nothing happened. Only half a meter. But yogic force is saving the country. We are spoiling it. Not only country, not only India. The rishis, the yogic forces in Himalayan mountains, under the snow covering of the caves also, they are making the world peaceful. They are trying to make the world peaceful, and they are forcing
They are transmitting power to the persons, and they are forcing the persons to go to each corner of the world also to make them realize the need of the day. We have to protect the Mother Earth. 5 valents. We are polluting soil. Pitiable thing is, we are hiding nuclear weapons in the soil, inside the soil. You leaders of the countries and you intellectuals, you scientists, think, opening your hearts and think is whether it is true or not. We are hiding the nuclear weapons in the ocean, submarines. We are hiding the nuclear weapons in the spaceships. Why? For what purpose? Is it harming the earth or doing any good to the earth? No, nothing good. We are thinking and we are frightening about this crisis and that crisis and that crisis, financial crisis, social crisis, our crisis, this crisis, that crisis. But think about the crisis which is happening for the earth, in the earth. So we are not thinking about this. So we have to think. And now the time for the sequence of Sai Charitra Parayana. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। प्रोफेसर R.D. रानाडे का कथन है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्मतत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना मुश्किल कार्य है। श्री दास गणु ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारण करवाने परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पहले की तरह जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भाव अर्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इस कारण श्री दासगणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ। ये उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयां उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दासगणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी। बाबा के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके वे शिरडी से विले पार्ले बंबई के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहां ठहरे। दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था, एक लाल रंग की साड़ी वो कितनी सुंदर थी,
उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, आदि आदि। उन्हें वो गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि ये गीत एक बालिका नामिया की बहन, जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगणु को दया आ गई और दूसरे दिन श्री दासगणु ने श्री एम.वी. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर एम.वी. प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने की प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी, अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी और अन्य बालिकाओं के साथ वो फुगड़ी खेलने में मगन रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पहले की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, फिर भी पिछले दिन की तरह ही प्रसन्न दिखाई दी। ये देखकर श्री दासगणु की दया आश्चर्य में परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख दिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और ये निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वो सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वो अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार ये है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। When I happen to come over touching the North Pole, over the North Pole to the Seattle from Dubai, Emirates, then divine touch, divine vibration, divine wave entered in my body, touched heart and brain. Immediately, Mother Earth appeared in human form, rolling the tears. Then a song came from the deepest part of the heart, and that day I did not express. After coming to Seattle, sitting in the room, little boy came and, why are you like this sitting? What are you thinking? I told, and you sing, you can sing. Then immediately this came from the deepest part of the heart. I will sing for you. Mata manasa smarami bhumata shirasa namami Mata manasa smarami bhumata shirasa namami Panchabhuta Shamaikya Swarupini Panchabhuta Shamaikya Swarupini Panchaprana Pramoda Pradayini Panchaprana Pramoda Pradayini Mata Manasa Smarami Bhumata Sirasa Namami सकल चराचर जीवदायिनी
सकल चराचर जीवदायिनी सर्वमानव प्राणप्रदायिनी सर्वमानव प्राणप्रदायिनी विश्वविराजित तेजोरूपिणी विश्वविराजित तेजोरूपिणी विश्वप्रिये विश्वप्रेमानुरागिनी माता मनसा स्मरामि भूमाता शिरसा नमामि ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ దేశమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ దేశమైనా మనుషులమంతా నీ పిల్లలం మనుషులమంతా నీ పిల్లలం మనుషులమంతా నీ కుటుంబం మనుషులమంతా ఒకే కుటుంబం మాతా మనసా స్మరామి భూమాతా శిరసా నమామి పంచభూత సమైక్య స్వరూపిణి పంచభూత సమైక్య స్వరూపిణి పంచప్రాణ ప్రమోద ప్రదాయిని పంచప్రాణ ప్రమోద ప్రదాయిని మాతా మనసా స్మరామి భూమాతా శిరసా నమామి. So if we unitedly try to love the Mother Earth, and if we unitedly try to make the Mother Earth peaceful, we can do it. If man wills, man can do anything. If man enlightens the divinity in his body, and if he trains the mind, mental power which is existing in his body, he can do anything. And he will become a man of victory. So my appeal, my aim, my mission is his mission to make a man of victory, to be loved by the Lord, and he will be satisfied then. Lord will be satisfied. Oh, you are my heir. I am very happy to give life to you, to give body and mind to you. I am very happy to keep you in this world because you have done my work perfectly 100% with satisfaction of myself. I am very happy. So we have to make him happy doing his work, to filling the heart with the divine love and filling the mind with peace. Spread love and peace wherever you go. We have to satisfy the Lord. नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च. It has been great being with you in this episode of Shirdi Sai Vishwa Sai. Thank you very much for being with us. Sai Ram. Namaskar. निरंजनी सद्गुरु स्वामी स्वामी सुखे निरागरा अवधूता बाबा करा साईनाथा मजरे सुख काम जाऊनी